Please start. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ઉત્તર પ્રદેશ ફેડરેશન, કર્ણાટક ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન, મુંબઈ ફેડરેશન ના આજના પ્રવચન અંતિમ સ્વતંત્રનો માર્ગ આપણી અંદર જ છે ના વક્તા તેંડુલકરજી, લલિતા નટરાજજી, મીનાક્ષીજી અને મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત કેશવરબેન દસ્તુર આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, Vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, Oh, hidden light, hidden light, shining in shine every in creature. every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. No, he is is also one with every other. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કેશવરબેન. હવે હું તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई. तो हम आज के इस शानदार विषय की शुरुआत करते हैं. सभी जो वक्ता है स्पीकर से बहुत बहुत धन्यवाद आपके पधारने के लिए. साथ ही जो लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनका भी स्वागत. हमारे साथ बहुत वयोवृद्ध भास्कर तेंदुलकर जी हैं. उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा. वे बीएससी हैं, ऑनर्स, एमए हैं, टीआईएसएस और साथ में एलएलबी भी. उन्होंने बहुत गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओस की में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं. वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भी एक विजिटिंग फैकल्टी की तरह जाते हैं और प्रोजेक्ट गाइड भी हैं. पुणे लॉज टीएस के साथ वो 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं. एक्स सेक्रेटरी हैं मराठी फेडरेशन के, एक्स प्रेसिडेंट हैं पूना लॉज के, एक्स एडिटर हैं जो थियोसॉफिकल एक बाय मंथली निकलती है जागृति विश्व बंधुत्व. नेशनल स्पीकर तो वे हैं ही और बहुत सारे लॉज फेडरेशन में थियोसॉफी का प्रोपोगेशन करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, वर्कशॉप करते हैं, स्टडी गेम्स कवर करते हैं और पूरे भारतवर्ष में थियोसॉफी का बहुत अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करते हैं. तेंदुलकर जी, आपका स्वागत है. आज के विषय पर आप कृपया बोलना शुरू करिए. धन्यवाद. Thank you, Taral Munshi ji, for giving me this opportunity to speak on your channel. The subject of the speech today is the way to final freedom is within thyself. This is a verse chosen from the Voice of Silence, second fraction. And Voice of Silence is one of the mystic collection by HPB when she was in Tibet. And this is considered to be one of the very important piece of theosophical literature as well as Mahayana Buddhism. The philosophy which is communicated through Voice of Silence is based on the disciples of Buddha who migrated to Tibet, and based on the experiments which they carried out
on the original teachings of Buddha is a result of the record which they left behind. And from that, Madame Blavatsky has composed this voice of silence. I had delivered this speech earlier at Cuttack in the National Conference of the East Indian Theosophical Federations in the month of February. And I am just giving a summary of that talk in this speech. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, a portion of myself goes forth into the world of matter, draws around itself the five senses and mind as the sixth. Jeevatma is a fraction of the Paramatma, the Supreme. Though himself limitless, beyond time and space, unmanifest, his great sacrifice has led to the creation of a manifested universe. With its diversity out of fundamental unit, it is the law of sacrifice at the base of the universe and the evolution of all creation. Jeevatma has all the potentialities of the Paramatma, but in a seed form. In involution, it enters matter and contacts and later evolves and expands out of matter. This is a case of a great sacrifice in involution and emerging out with full and final freedom, a journey through complete cycle of involution and evolution. Christ has said, be therefore perfect as your Father, who in heaven is perfect. Jeevatma, in his worldly incarnations, passes through severe trials and suffering, but in the long run attains spiritual perfection and freedom using the material vehicles which were the cause of bondage and loss of freedom. It is true that spirit of a man is seriously handicapped by his material vehicles. It is the challenge before the Jeevatma to turn this handicap into an asset towards this journey to perfection. This is possible provided he remembers and follows the advice of the great ones. That advice is, know thyself. These great ones have emerged triumphant and made this challenge successfully. They are the adepts, the perfected men. The way to final freedom begins with the first step, know thyself. One can find evidence of divinity in the existence of perfected men who have successfully turned potentiality into actuality. This is enough to build faith and gather strength to tread the path to final freedom with endurance till the end. Man's forgetting his divine origin and identifying himself with the vehicles of his consciousness, such as his physical body, emotions,
and mind is the ignorance, avidya, illusion, whatever you may call it. That is all of his suffering. Out of ignorance, he acts, knowing not what is right for him as a Jivatma. Due to lack of development of faculty of discrimination, his actions are prompted by desires of vehicles. There is hardly any consideration of the developmental needs of Jivatma. This identification with vehicles results in lack of right perception and action and the consequent suffering. The Jivatma, instead of becoming the master of the vehicles, surrenders his will to the desires of his vehicles. Understanding dawns as a result of the repeated failures in asserting the will of the Jivatma and suffering that follows due to blind following of the desires of the vehicles. He realizes his illusory identification with his vehicles and the necessity to assert himself over his vehicles. This is the second essential step on the path of final freedom. The lesson learned is that his vehicles are neither himself or final freedom. The lesson learned is that his vehicles are neither himself nor his master, but they are his instruments to be used as tools at his command and control for growth and development of his divine potentials and for performance of duty and right action. Duty of the spiritual aspirant now is to take his evolution to cultivate and refine his vehicles to make them fit for the consciousness of Jivatma to flow through them without obstruction. Due to lack of attentiveness and vigilance about the growth needs of the Jivatma, accumulation of the effects of wrong thoughts, wrong emotions, and wrong actions have produced their karmic results, and they need to be resolved before making an advance on the spiritual path. Vehicles are polluted and congested with impurities of the past, and their purification as a foundation of spiritual life ahead is a prerequisite for progress. Science of yoga has been evolved in aid of spiritual aspirant. Ashtanga Yoga Patanjali begins with yama and niyama to lay this foundation of spiritual life. Asana and pranayam render the physical vehicles fit, and pratyahara enables turning attention from the external world to the interior of our being. The final limbs of yoga, meaning dharana, dhyana, and samadhi, are to discipline and control the mind, which till now was the ruler and controller. Practice of meditation helps understand the working of the mind. Mental discipline in the form of dharana and dhyana enable one to conserve wasteful mental energy and channelize it for
creative purposes. Further, it becomes possible to transcend the concrete mind and its limitations. It enables one to bring to standstill all mental modifications and experience peace that passeth understanding. This happens when consciousness transcends personality and discovers interior depths of individuality. The higher upward triangle of Atma, Buddhi, Manas, that is our true nature, divine nature or nature of divine origin. This realization may be like a flash of light, a momentary surge of consciousness where one forgets oneself and becomes one with oneself. Shall I stop here, Munshi-ji, or continue? सर आप म्यूट हैं सर आप म्यूट Sir, you can continue for 5 minutes. Then Okay. part 1 will be over. Sir. Okay. Meditation is a path which shows us our destination clearly and enlightens the path by that destination. Experience of union with divine is a source of divine energy flowing towards the aspirant unceasingly thereafter. Personality then ceases to exist apart from individuality. It functions in complete obedience and harmony with individuality. The dual nature of mind comes to an end. Consciousness, unfolded and expanded on the higher subtler planes, triggers awakening of hidden potentials. Development of intuition opens doors to the hall of wisdom. Buddhic consciousness awakens the feeling of loving brotherhood with all, not only fellow beings, but all human beings without distinction, and even with those belonging to other kingdoms of natures. Equality of life changes beyond recognition. Ever new, ever fresh. It is living beyond the limitations of time and space. It is living not for oneself, but for others. For all that exists in the universe. This is the union with God that exists in every heart. And it cannot be otherwise, since we all share one life. Thus, effect of meditation is not on meditator alone, it pervades all and everywhere. As above, so below is the observation of the ancient wisdom in the context of the laws of the universe operating at macro and micro levels. We observe astonishing correspondences between the constitution of the universe and the constitution of man. There are different planes of consciousness corresponding to the 7 vehicles principles of man. Jeevatma draws material
for his vehicles from corresponding planes, and after dissolution of the vehicles, dissolved material goes back to respective planes. Similarly, all individual consciousnesses are confined to individual vehicles, but they all are essentially originated from one universal consciousness. Therefore, it is perfectly logical to say that we all share one life. Differences observed at individual level are due to differences in purity and quality of material of the vehicles, which is a product of individual karma. As individual consciousness unfolds and expands along with evolution of vehicles, differences apparent at the lower level diminish, and at higher level, common similarities become obvious. Many scientific survey findings have confirmed the validity of ancient wisdom. I think Yes, sir. here I Yes. take a break. ओके सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा ललिता जी को। ललिता नटराज जी सोशल वर्कर हैं और हाउसवाइफ हैं, मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर हैं 1980 से, टीओएस की मेंबर है वो भी 1980 से, और बहुत ही ऑनररी सर्विसेज देती है वो एक होम्योपैथिक हीलिंग सेंटर में 1981 से। सोशल वर्कर की तरह उन्होंने कर्नाटका वेलफेयर एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के लिए काम किया हुआ है और करती आ रही हैं। लेक्चर्स दिए हैं बहुत सारे स्पिरिचुअल सब्जेक्ट पर। 1980 से 82 के आसपास से वो लेक्चर दे रही हैं। वे फैमिली काउंसलर की तरह भी प्रसन्ना काउंसलिंग सेंटर में कार्यरत करती हैं या उन्हें सोशली मदद करती हैं, और बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटीज में वो संलग्न है, स्पेशली जो हैंडीकैप या नीडी पर्सन्स रहते हैं उनके लिए। आइए आप हमारे इसी विषय को कन्नड़ा में प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद। उसके बाद हिंदी में होगा प्रसारण। Thank you for this thing, sir, for inviting me to speak, sir. Yeah. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ಭೌತ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 6ನೆಯ ಇಂದ್ರಿಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ಸೀಮಾತೀತ, ದೇಶಕಾಲಾತೀತ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮೂಲಭೂತವಾದ ಏಕತ್ವದಿಂದ ಅನೇಕತ್ವವು ಉಂಟಾಗಿ ತ್ಯಾಗದ ನಿಯಮವೇ ವಿಶ್ವದ ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಂತೆಲ್ಲ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯು ವಿಕಾಸದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹತ್ತರವಾದ ತ್ಯಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಂಸರಣಿಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣನೇ ಆಗಿರುವೆ ಅಂತ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅವನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇಹ ಧಾರಣೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ
ಮತ್ತು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಭೌತಿಕ ಶರೀರಗಳಿಂದ ಮಾನವನ ಆತ್ಮ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪಂಥಾಹ್ವಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇವನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮ ಗೆದ್ದು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಮಹಾತ್ಮರ ವಾಣಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿ ಅಂತ. ಅವರುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂಥಾಹ್ವಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದವರು. ಅವರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರು, ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾನವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿ ಎನ್ನುವುದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾನವರ ದೈವಿಕತೆಯೇ ನಮಗೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮಗೆ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಲು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ. ಮಾನವ ತನ್ನ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನ ಮರೆತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಉಪಾಧಿಗಳಾದಂತಹ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ, ಕಾಮದೇಹ ಮತ್ತು ಮನೋದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಅವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಅವನ ಎಲ್ಲ ವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನು ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವನು ಆಸೆಗಳಿಂದ ಆವೃತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಗಳ ಒಡೆಯನಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದವನು. ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅಡಿಯಾಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಜೀವಾತ್ಮನು ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತನ್ನ ಉಪಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಾನು ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಿಡಿತವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಕಲಿಯುವ ಪಾಠವೇನೆಂದರೆ, ಅವನ ಉಪಾಧಿಗಳು ಅವನ ಒಡೆಯರಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಸಾಧನಗಳು. ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಉಪಾಧಿಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಅವನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ತನ್ನ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ಉಪಾಧಿಗಳು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅವನು ತನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ, ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮವು ಸಂಚಯವಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಪಾಧಿಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಅವನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಯಮ ನಿಯಮಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದ ತಳಹದಿಯಾಗಿವೆ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರಲು ಆಸನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಂತರಂಗದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಅಂಗಗಳಾದ ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರಣಾ ಧ್ಯಾನಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಸಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೀರಿದ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಆಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉನ್ಮೀಲನ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆತ್ಮ, ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಊರ್ಧ್ವ ತ್ರಿಕೋನವೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಮೂಲ. ಈ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯಬಹುದು. ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಆ ಏಕ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಲು ಧ್ಯಾನ ಒಂದು ದಾರಿ, ಹಾಗೂ ಅದು ಆ ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ದೈವತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸದಾಕಾಲ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ದೈವತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಸಮರಸತೆಯಿಂದ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವಭಾವ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾ ಉನ್ನತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಪ್ತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಬೆಳೆದು ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನ ಉನ್ಮೀಲನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಮಾನವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ದೇಶಕಾಲಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಸದಾಕಾಲ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದು ತನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಶ್ವದ ಇತರರಿಗಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವಿಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಂದೇ ಜೀವನವನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನದ ಪರಿಣಾಮ ಬರೀ ಧ್ಯಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಳಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ವಿಶ್ವದ ನಿಯಮಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಮಾನವನ 7 ಉಪಾಧಿಗಳು ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೀವಾತ್ಮ 2 minutes to sum up. ಆಯ್ತು. ಜೀವಾತ್ಮ ತನ್ನ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಆಯಾ ಉಪಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಜೀವನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಂತೆ ತನ್ನ ಉಪಾಧಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸನಾತನ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಜಿ. थैंक यू ललिता जी और मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है। आप हिंदी में अपना व्यक्तित्व देंगी और छोटा सा परिचय देना चाहूंगा आपका। मीनाक्षी जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी 1988 में ज्वाइन की। ये 2nd जनरेशन थियोसॉफिस्ट हैं। इनके पेरेंट्स भी थियोसॉफिस्ट थे। वैसे वे नागपुर लॉज को बिलोंग करती हैं, पर वर्तमान में वो भोपाल रह रही हैं। रिसेंटली मतलब उन्होंने काफी एक्टिव पार्ट लिया था एक स्टडी क्लास में उज्जैन में, और मराठी फेडरेशन के लाइव इवेंट में जो 50 बच्चों के साथ 2 दिन तक चला था, उसमें भी उन्होंने पिछले वर्ष बहुत अच्छे से अपना योगदान दिया था। और वो ऑन द स्पॉट मराठी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी करती हैं। इंडियन सेक्शन से लगातार जुड़ी हुई है, और वहाँ भी मास्टर्स के जो लेटर्स हैं उसके लगातार जो प्रसारण होता है उसमें बहुत ही
अभूतपूर्व और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट निभाती हैं। आइए मीनाक्षी जी, आपका स्वागत। नमस्ते सभी को। थैंक यू तरल जी, थैंक यू तेंदुलकर जी, सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज का विषय है अंतिम मुक्ति का मार्ग हम में ही अंतर्निहित है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इह लोक में स्वयं मेरा एक हिस्सा जाता है और पंचेंद्रिय और मन में लिप्त हो जाता है। हालांकि वह समय और स्थान से परे है, असीम अनंत है, अव्यक्त है, फिर भी उनके महान त्याग से ब्रह्मांड का सृजन हुआ। ब्रह्मांड और सृष्टि का विकास त्याग बलिदान के नियम पर आधारित है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा में परमात्मा की क्षमताएं बीज रूप में अंतर्निहित है। इन्वोल्यूशन में वह पदार्थ में लिप्त होता है, सीमित होता है और तत्पश्चात विकसित होकर पदार्थ से विलग हो जाता है, मुक्त होता है। यही वह महान त्याग है, अवक्रमण और उत्क्रांति के संपूर्ण चक्र की यात्रा है। ईसा मसीह ने कहा है, इसीलिए स्वर्ग में विराजमान अपने परम पिता की भांति आप परिपूर्ण बने। भौतिक जगत में अपने पुनर्जन्मों के दौरान जीवात्मा कड़े परीक्षणों और दुखों से गुजरता है, लेकिन आखिरकार वह उन्हीं साधनों द्वारा आध्यात्मिक परिपूर्णता और अंतिम मुक्ति प्राप्त करता है जो उसके बंधन के कारक थे। यह सच है कि मनुष्य की आत्मा उसके भौतिक वाहनों के कारण निष्प्रभ हो गई है। इस बाधा को परिपूर्णत्व की यात्रा के लिए उपयोगी साधन बनाना यह जीवात्मा के सामने एक चुनौती है। जिन्होंने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया और विजयी हुए, उन महात्माओं को यदि वह स्मरण में रखता है, नो थायसेल्फ, स्वयं को जाने, उनकी इस सलाह का पालन करता है, तब यह संभव है। वे जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष है। मुक्ति का मार्ग स्वयं को जानने के प्रथम चरण से आरंभ होता है। सिद्ध पुरुषों के अस्तित्व में दिव्यत्व का प्रमाण मिलता है, जिन्होंने संभावना को सफलतापूर्वक वास्तविकता में बदला है। मुक्ति के मार्ग पर धैर्य के साथ चलने के लिए, शक्ति और विश्वास को बनाए रखने के लिए यह प्रमाण पर्याप्त है। मनुष्य अपने मूल दिव्यत्व को भूल गया है और स्वयं को भौतिक शरीर, वासना देह और मनोदेह जैसे चेतना के वाहनों के रूप में पहचानता है। यह अज्ञान अविद्या है जो उसके दुख का कारण है। एक जीवात्मा के रूप में उसे सही गलत की पहचान नहीं होती। वह अज्ञानता में अपने क्रियाकलाप करता रहता है। विवेक शक्ति का विकास न होने के कारण उसके कार्य उसके कोशों की इच्छाओं से या तृष्णाओं से प्रेरित होते हैं। जीवात्मा के विकास की आवश्यकता पर शायद ही वह विचार करता है। अपने कोशों के अधीन होने के परिणाम स्वरूप सही बोध और कृति न होने के कारण उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। अपने वाहनों का स्वामी न होकर जीवात्मा अपनी इच्छा शक्ति के कोशों की तृष्णाओं के आगे झुक जाता है। विवेक शून्यता से इच्छा पूर्ति में लगे जीवात्मा को कष्टों से गुजरना पड़ता है और लगातार असफलताओं का सामना करने के उपरांत उसमें समझदारी आती है। अपने कोशों के भ्रामकता की उसे पहचान होती है और उन पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता को वह महसूस करता है। मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने वाला यह दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। उसे यह अनुभूति होती है कि यह वाहन या कोश वह स्वयं नहीं है और न ही उसके स्वामी है, बल्कि वे उसके साधन है जो दिव्य क्षमताओं के विकास और अपने कर्तव्य पूर्ति और सही कार्य करने के लिए उसके आदेश और नियंत्रण के उपयोगी है।
अध्यात्म के मार्ग पर एक साधक का अब यह कर्तव्य है कि अपने वाहनों को निर्मल करे, परिष्कृत करे, ताकि जीवात्मा की चेतना बिना किसी बाधा के, अवरोध के उनमें से प्रवाहित हो सके। जीवात्मा के विकास में लगने वाली सतर्कता और सावधानी के अभाव के कारण गलत विचार, भावना और कार्यों के परिणाम स्वरूप कर्मों की व्युत्पत्ति से प्रभावों का संचय होता है और आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने से पहले उनका निराकरण करने की आवश्यकता है। अतीत की मलिनता से वाहन दूषित होते हैं और आत्मिक उन्नति के लिए इनका शुद्धिकरण आवश्यक है। यह आध्यात्मिक जीवन की नींव है। साधक के लिए योग विज्ञान सहायक है। पतंजलि के अष्टांग योग आध्यात्मिक जीवन की नींव को यम नियम से शुरू करते हैं। आसन और प्राणायाम स्थूल शरीर को उपयुक्त बनाते हैं और प्रत्याहार हमारा ध्यान बाहर की ओर से अंतरतम की ओर केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। मन जो अभी तक नियंत्रक और शासक के रूप में था, उसे अनुशासित और नियंत्रित करने के लिए अष्टांग योग के आखिरी अंग धारणा, ध्यान, समाधि है। ध्यान का अभ्यास मन की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। धारणा और ध्यान मानसिक संयमन करता है, मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करता है और सत्कार्यों के लिए सक्षम बनाता है। इसके अलावा मूर्त मन और उसकी सीमाओं के परे जाना संभव होता है। यह सभी मानसिक परिवर्तनों को स्थिर करने में और शांति जो समझ से परे है इसका अनुभव करने में सक्षम बनाती। यह तब होता है जब चेतना देहात्मा से परे जाती है और जीवात्मा के अंतरतम गहराई में उतरती है, यानी आत्म बुद्धि मनस का उच्च ऊर्ध्व कोण त्रिकोण जो हमारा सच्चा दिव्य स्वरूप है। यह अनुभूति प्रकाश की चमक की तरह होती है। चेतना का क्षणिक विस्तार होता है जब व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है और अपने दिव्यत्व से एकरूप हो जाता है। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो हमारी मंजिल को, अपने गंतव्य को स्पष्ट रूप से दिखाता है और उस मंजिल के मार्ग को आलोकित करता है। दिव्यत्व से एकाकार की अनुभूति करने के उपरांत दिव्य ऊर्जा निरंतर साधक की ओर प्रवाहित होते रहती है। तब देहात्मा पूर्णतः जीवात्मा से समरस हो जाता है और उसकी आज्ञाकारिता में कार्य करता है। मन के द्वैत भाव का लोप होता है। चेतना का सूक्ष्मतर उच्च लोकों में विस्तार होता है और सुप्त शक्तियां उजागर होती है। अंतः प्रज्ञा के विकास से प्रज्ञा शक्ति के द्वार खुल जाते हैं। बुद्धिक चेतना न केवल अपने साथी बंधुओं से बल्कि सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के बंधुत्व को जागृत करती है। यहाँ तक कि प्रकृति के सभी वर्गों से भी बंधुत्व प्रस्थापित होता है। जीवन की समरूपता अनाकलनीय रूप से बदलती है। सदैव नावीन्यपूर्ण, सदैव स्फूर्तिदायक। यह समय और स्थान की सीमाओं से परे रहना है। यह केवल अपने लिए जीना नहीं बल्कि विश्व में जो भी अस्तित्व में है उन सभी के लिए जीना है। यह सभी के हृदय में बसे ईश्वर से एकरूपता है। इससे भिन्न कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हम सभी में एक ही जीवन है। इसलिए ध्यान साधना का प्रभाव केवल साधक के ऊपर ही नहीं बल्कि सर्वत्र होता है। स्थूल और सूक्ष्म स्तरों पर संचालित वैश्विक नियम के संदर्भ में ब्रह्म विद्या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे उद्घोषित करती है। हम ब्रह्मांड और मनुष्य की रचना में अभूतपूर्व समानता देखते हैं। मनुष्य के साथ वाहन या तत्व वैश्विक चेतना के विभिन्न स्तरों के अनुरूप है। संबंधित स्तरों से जीवात्मा अपने कोशों के लिए पदार्थ लेता है और उन कोशों के विघटन के उपरांत विघटित पदार्थ संबंधित तलों में वापस जाते हैं। इसी तरह प्रत्येक चेतना स्तर उन संबंधित कोशों में आबद्ध होती है, परंतु इनका उगम वैश्विक चेतना से है। इसलिए यह तर्कसंगत है
कि हम सभी में एक ही जीवन है। व्यक्तिगत स्तर पर देखी जाने वाली भिन्नता कोशों के पदार्थ की शुद्धता और गुणवत्ता की भिन्नता के कारण होती है, जो व्यक्तिगत कर्मों के परिणाम स्वरूप है। जैसे जैसे व्यक्तिगत चेतना का कोशों के विकास के साथ साथ विस्तार होता है, वैसे वैसे निचले स्तर पर दिखाई देने वाली भिन्नता घटती है और उच्च स्तर पर समान रूप की समानता स्पष्ट होती जाती है। धन्यवाद मीनाक्षी जी, एकदम राइट टाइम पर आप खत्म करती हैं हमेशा। तेंदुलकर जी प्लीज पार्ट 2 आरंभ कीजिए। थैंक यू। सर काइंडली अनम्यूट। अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अनम्यूट नहीं हुआ। तेंदुलकर जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। मोबाइल में हेलो। हाँ हो गया सर, हो गया। हो प्लीज गया गो। ना? यस सर, यस सर, थैंक यू, हाँ। थैंक यू। प्लीज So we have to discover what really prevents us from our treading the path to final freedom. When we say freedom is within thyself, so it's quite clear that freedom is not to be obtained from anything external, but we have to realize that we have lost our freedom in the process of evolutionary development. We say mana eva manushyanam sadhanam bandha mokshayo. So we come back to mind again. It is the mind which plays a key role in our development, whether it is creation of obstacles or bindings, or whether it is releasing from all those obstacles and bindings. We have to understand the functioning of our mind, its capacities, its limitations, as well as its potentialities. What are the limitations of the mind? We depend on mind for all our knowledge. We perceive things, and based on that knowledge, we think, we act. So all this happens through the channel of the mind. We develop memory. Memory is our advantage as well as a disadvantage, because it binds us to the past. Similarly, mind also takes great interest in thinking about future, imaginations. And this way we are bound to the past and the future, which really separates us from the present. While what is really necessary is to live in the present.
this moment to moment awareness is very much necessary for us to explore all our potentialities. We have to be in that moment which is described as eternal now. That means to live beyond the limitations of time and space. Perception of truth is limited by these limitations of the mind. We see everything on the basis of our past knowledge, our memory, and our projections of mind in the future. Therefore, the basic requirement of yoga to stop all modifications of the mind becomes the central theme. When we are able to stop these modifications, we are also in a position to control our mind and also utilize our mind through the channels which lead us to the path of liberation, path proper, path perfect of perfection. But it has also been said that you can tread the path when you become one with the path. So we have to develop that ability to go beyond the mind, to transcend the mind. It is only then that we can understand, really experience the limitations of the mind and also the beauty of transcending the mind. The beauty of perception, right perception, which takes us to that hall of wisdom. There are 3 halls described in the voice of silence: hall of ignorance, hall of learning, and hall of wisdom. These are symbols of our spiritual journey. In the initial stages, we are simply dependent on our jnanendriyas and mind. We are almost, as I mentioned earlier, living life to satisfy the desires of these vehicles. And our main task is to understand these limitations and to convert these limitations into strengths or assets. And that is whole process described beautifully in the, is there a light? केले काय वाचायचं त्यातलं पण लाईटच गेले याचं हे आहे लॅम्प आहे. Amazing, you are continuing in dark also, sir. Here lights have gone, so yeah, we could see it, sir. Since long it has gone. Please. So we have to take our journey from ignorance through the process of learning to wisdom. And this is the way ancient wisdom has given us considerable guidance for the journey of the aspirant. Even the recent advances in the behavioral science, modern discoveries by scientists like Maslow, are in tune with whatever researches have been made
in the ancient literature like science of yoga, Upanishads, and so on. Therefore, it is really educative to go through the findings of Maslow, who says that the persons who are really developing spiritually show various kinds of indications. They are more natural, they are less bound by conventionalities, formalities. They develop the ability to explore the strengths of the soul, strengths of the individuality. They transcend beyond the personality. They have deep feelings of compassion for human beings and also other beings. They have very high power of discriminative facility. They are beyond normal discriminations based on class, race, color, etc. So this non-discriminative faculty is developed among all these people. They have deep feelings of compassion. So it is not only development of the mental faculties, but also emotional faculties. It is the transcendence of the mind bringing us in the region of the buddhi, where we experience and realize the brotherhood with all beings. Such a person accepts himself as he is, and he also takes others as they are. So he is considerably tolerant, appreciative, and flexible. He is autonomous and independent of culture, environment, and dependent on his own potentialities and latent resources. He is creative. His perceptive ability is fresh, new, and direct. So all these things are quite in conformity with the various kinds of qualities and characteristics which we find in the persons who are on the spiritual path, who have advanced and who are highly evolved. So this is a scientific confirmation of the findings of the ancient science, ancient rishis, munis, and all that. But this treading of the path, there is need to be vigilant, cautious, to be aware of the likely pitfalls and dangers which have been pointed out to us from time to time. Even in the Mahatma letters, we find very useful suggestions, hints, instructions, advice to the aspirants. They say, beware of pride and egoism, two of the worst snares for the feet of him who aspires to climb the high paths of knowledge and spirituality. Wealth or property
high or low birth or civilization have nothing much to do with spiritual progress. It is the inner man, the spirituality, the illumination of the physical brain by the light of the spiritual or divine intelligence is the test. We allow our, say what masters say, we allow our candidates to be tempted in 1,000 various ways so as to draw out the whole of their inner nature. So this is worth noting that even some of the difficulties or obstacles are really put in our way by the masters themselves to really test us, to take a trial of our morality, our soundness, the Yama-Niyamas, which are the foundation of a spiritual life. So we should face all these things boldly, should not take a turn back or recede from the path which we have undertaken. Masters say we have no right to influence the free will because every man is a free agent in nature. He has been given that capacity to work out his own ways. He is his own light. So such interference would be a flagrant contradiction in the basic law of esotericism, that personal psychic growth accompanies pari passu development of individual effort. So one has to be aware of these psychic faculties developing. That's why Blavatsky has says that this is for those who are ignorant of the iddeets, lower iddeets, because as person advances on the spiritual path, he is quite likely to develop his psychic faculties. Though spiritual faculties might take time. And in the meanwhile, person may become victim of those powers which he develops. If he has not developed the foundation of Yama-Niyamas, the character, the virtues. Without virtues, man is likely to be tempted by the little bit of powers that he develops. He may be tempted to utilize them for his selfish purposes. So this is a note of caution for all those who are ignorant of the lower deeds. That's why these are instructions of advice for all aspirants, that till the end of the journey, they have to be vigilant of the likely pitfalls, till they have developed all virtues. Virtues are to be developed beyond perfection, like say dana and shila. It is not just being philanthropist by giving donations of physical things. It is the spirit of philanthropy that has to be developed at all levels of consciousness. We should be emotionally philanthropic. We should be mentally philanthropic in our attitudes, in our feelings, thoughts, in our appreciation of others. So for that, Shila is necessary. That is the inner source of the outer dana. One has to develop character. One has to develop all virtues. There are so many virtues mentioned, like virya, prajna, and there are also
dhyana, upaya, pranidhana, bala, jnana. So many virtues, about 10 virtues have been mentioned by Blavatsky. And those need to be developed in the right sense. These are not to be taken just verbally by their dictionary meaning. They have much deeper meaning, and they have to be understood and practiced with that deep interest. And one more virtue which Blavatsky has added in between the trial. There are 2 triads of these 6 virtues, and in between she has added Vairagya as a very important virtue which we have to develop. Even with discrimination, we know the importance of Vairagya. So these faculties have to be developed if we really want to discover the freedom within. We have to... 2 minutes Yes? to sum up, sir. Sir, 2 minutes to sum up. Okay. We have to dissociate ourselves from all the associations which we have made in the past if we really want to liberate ourselves. And it is only after liberating ourselves that we will be able to live life for others, because that is the real test of a person who has liberated himself. There are 2 different terms used in Voice of Silence. One is Pratyeka Buddha, or a selfish Buddha, who advances, but for himself. He doesn't remain with the humanity, but the Buddha or the Bodhisattva, who is remaining with the humanity even after liberation, just to serve the humanity, to relieve humanity from all its sorrows and ignorance, and take them along with him on the path of evolution. So it is that who really discovers the final freedom within, which is our topic today. So here I stop, and thank you once again for your patient participation and listening. Thank you, sir. Tendulkar ji, hats off to you. Even in darkness, you can show light. Thank you. Yeah, it is complete darkness. Yeah, Lalitha ji, please go ahead with your version. Thank you. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಇರಿಸುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳಿತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಾಪತ್ರಯ ಕೂಡ ಹೌದು, ಅದರ ಅಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ನಮಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಅರಿವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವೇ ಯೋಗ. ಯೋಗದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀನು ದಾರಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಮಿಸುವೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಅರಿತಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಅರಿವು. ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮೀರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು
ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಧಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಾಗೆ ಹೋದವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಾಸ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಡವಳಿಕಾ ತಜ್ಞ ಕೆಳಕಂಡ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನ ಅರಿತಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನ ಅರಿತಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಅಹಂನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಜೀವನ ಧ್ಯೇಯಗಳಂತೆ ಬದುಕುವವನು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅಂತಸ್ತು, ಬಣ್ಣ, ಜಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರ ಬಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಕರುಣೆ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ತನ್ನನ್ನ ತಾನಿರುವಂತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನ ಅವರು ಇರುವಂತೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸ್ವಾಯತ್ತನಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಅವನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕನಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಸತಾಗಿದ್ದು ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಸಹ ಉನ್ನತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ದಾರಿಯನ್ನ ಕ್ರಮಿಸುವಾಗ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೈರುಧ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅನೇಕ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿರತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರುಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಬೇಕು. ಸೂಚನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇವೆ. ಮೊದಲ ಸೂಚನೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಅಹಂಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಉನ್ನತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಲು ಬಯಸುವರೋ ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಈ ಎರಡು ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಥವಾ ಬಡತನ, ಉನ್ನತ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ನ ಜೀವನ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಸಹಾಯಕವಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಗತ ಜೀವನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಸ್ಥೂಲ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ ಕೆಲ್ಸಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರನನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೆಯ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಲು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಅಂತರಂಗದ ಸ್ವಭಾವ ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ, ಆಸೆಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಮೇಲೆದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರಂಗದ ಸ್ವಭಾವ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮನಸ್ತತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ಲೌಡ್ಸ್ಕಿ ಅಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 10 ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮೌನವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ನಡಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಳವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಮಹಾತ್ಮರ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಲ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನ, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಾಧಕನ ಜೀವನ ವಿಧಾನವೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರತ್ತೆ. ಅವನು ಜೀವಿಸುವುದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಅವನಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಕೆಲಸವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅವನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿಗಾಗಿಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ತನ್ನನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ, ಕೀರ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಹೊಸ ಕರ್ಮ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಕರ್ಮವೂ ಕೂಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಕನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೇಮ ಪೂರಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು, ಅವನ ಈ ದೈನಂದಿನ ಜೀವಿತದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ, ಅವನ ಗುಣಗಳು, ಅವನ ಸೇವೆ, ಅವನ ಜ್ಞಾನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ವಂದನೆಗಳು. ಆಯ್ತು. बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी। मीनाक्षी, आप अपने पार्ट 2 पर आगे बढ़िए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मन दुखों का कारक है जो भूत और भविष्य में टाइम और स्पेस में आबद्ध है। इससे परे जाने पर ही उसे अंतिम मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। कई वैज्ञानिक शोधों ने ब्रह्म विद्या की पुष्टि की है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति की पहचान पर आधुनिक विज्ञान के शोध परिणाम ब्रह्म विद्या से काफी मिलते जुलते हैं। यह काफी रोचक है। व्यवहार आचरण के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शास्त्रज्ञ अब्राहम मास्लो ने आत्मानुभूति वाले व्यक्ति के गुण विशेषों की इस प्रकार पहचान की। वह स्वकेंद्रित नहीं बल्कि विशेष उच्च कार्यों के लिए समर्पित होता है। वह जात, धर्म, वर्ण आदि में भेदभाव नहीं करता। उसमें मनुष्य और बाकी सभी के प्रति करुणा भाव है। वह सदाचारी है और सही गलत की गहरी समझ वह रखता है। वह स्वयं को और दूसरों को भी वे जैसे है वैसे ही स्वीकारता है। वह संस्कृति या परिवेश के अधीन न होकर स्वयं शासित है और अपने अंतर्निहित क्षमताओं पर निर्भर है। यह सभी गुण विशेषताएं अति उन्नत विकसित आध्यात्मिक स्वरूप की है और जिस मनुष्य में यह विशेषताएं है वह निश्चित ही मुक्ति के मार्ग पर प्रस्थान करता है। लेकिन पथ पर अग्रसर होने के समय साधक को संभावित प्रतिकूलताओं और असफलताओं के प्रति सतर्क रहना होगा। इस संदर्भ में महात्माओं के पत्रों से महत्वपूर्ण संकेत हमें मिलते हैं। वे कहते हैं, जो ज्ञान और आध्यात्मिकता के उच्च मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं वे अभिमान और अहंकार से सावधान रहे। उनके लिए ये दो सबसे बुरे फंदे हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए धन दौलत या गरीबी, उच्च या निम्न कुल या सभ्यता कोई मायने नहीं रखती। मनुष्य का अंतरंग आध्यात्मिकता, दिव्य ज्ञान के प्रकाश से आलोकित मस्तिष्क ही उसका परीक्षण है। आगे मास्टर कहते हैं कि हम साधकों को हजारों तरीकों से लुभाते हैं ताकि उनके आंतरिक स्वभाव को पूरी तरह से बाहर निकाला जा सके। हमें उनकी स्वेच्छा को प्रभावित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार के हस्तक्षेप से
गुह्य विद्या के मूल नियम का आंशिक रूप से खंडन होगा। व्यक्तिगत प्रयासों के साथ उसका व्यक्तिगत मानसिक विकास जुड़ा है। महात्माओं के कथन स्वप्रयास और आत्मनिर्भरता के महत्व को निर्देशित करते हैं। अभिमान और अहंकार से मुक्त रहना, सभी प्रकार के प्रलोभनों और बाधाओं को साहस और आत्मविश्वास से सामना करना, यह एक साधक के दैनंदिन जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वह स्वयं के लिए या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं जीता, न ही प्रसिद्धि के लिए या नाम कमाने के लिए या साधारण सी पहचान बनाने के लिए जीता। वह ईश्वर के नाम पर समर्पित भाव से संतोष पूर्वक कार्य करेगा। कार्य करते हुए वह नए कर्म बंधन नहीं बनाएगा, बल्कि अपने सभी पिछले कर्मों को पूरा करते जाएगा, उनसे मुक्त होता जाएगा। अपने दैनंदिन जीवन को अलिप्तता से लेकिन प्रेम से जीने से किसी दिन वह अंतिम मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचेगा। थैंक यू। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी स्पीकर्स को एक बार फिर वीडियो ऑन करने को ही कहूँगा ताकि वे मंच पर रहें, और किसी को कोई प्रश्न हो तो वो तुरंत कर सकता है, या आप ही लोग कुछ और ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं। तेंदुलकर जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, ललिता जी, एनीथिंग टू ऐड ऑन? Hello. Nothing, sir. Nothing. Am I audible? Yes, तेंदुलकर जी, you are audible. हाँ, ट्रांसलेशन दोनों का बहुत अच्छा हो गया है। ललिता नटराजन and Meenakshi Gaidhani, I am really thankful to you for your very fluent translation and exact communication. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. तेंडुलकर सर नमस्कार. बोलिए. हाँ, नमस्कार. सर गोळे, इद्धी आणि सिद्धी यांच्यातला फरक सांगा ना जरा. इद्धी आणि सिद्धी म्हणजे इद्धी हा एकतर पाली शब्द आहे आणि सिद्धी हा संस्कृत आहे. पण इथे यांनी HPVनी तो वापरला आहे, तो लोअर सिद्धीज या दृष्टीने वापरला आहे. म्हणजे जनरली सायकिक फॅकल्टीज, नॉट स्पिरिच्युअल फॅकल्टीज. म्हणजे सर्टन पॉवर्स यू कॅन डेव्हलप बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ माइंड वगैरे, and those powers extend powers of your senses. म्हणजे तुम्हाला इतर सर्वसामान्यांना जे दिसत नाही ते त्या लोकांना दिसू शकतं, इतर सर्वसामान्यांना जे ऐकू येत नाही ते त्यांना ऐकू येऊ शकतं, यासारख्या गोष्टी. या दीज आर लोअर सिद्धीज. सो दे आर कॉल्ड इद्दीज. आणि हायर सिद्धीज या रिअल स्पिरिच्युअल फॅकल्टीज आहेत. ओनली व्हेन your consciousness reaches Buddhic level. Go ahead in English, it will be wonderful. So these are the lower faculties, while siddhis are the higher faculties. Okay. Only when your consciousness has unfolded and expanded, yes, reaching the Buddhic level, you develop those spiritual faculties. Otherwise, only at the mental level, when you develop certain powers by concentration of mind and concentration the mental energies, those powers are not necessarily indicative of your spiritual development. Some of the people who use black powers, they possess these iddhis or lower siddhis and can impress people about themselves as Siddha Purushas. But they mostly use those powers for selfish purposes, not for unselfish or philanthropic purposes, for the betterment of humanity and so on. Okay, sir. Thank you. Yeah. Yes, आभा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
very divine evening to all the masters, those who are present here. मैं पूछना नहीं चाह रही थी, मैं अभी सेल्फ कल्चर बुक में यहाँ से ले गई थी एक्चुअली पुणे से, अभी मैं उसे पढ़ रही हूँ और मेरा इसमें एक स्वाध्याय भी हो चुका है, फंक्शंस ऑफ एस्ट्रल बॉडी, जिस पे मैंने बात की थी। तो मैं तेंदुलकर जी से मिली थी पुणे में, शायद मुझे याद हो। और यहाँ के और मैं वहां से बहुत सी बुक्स लाई थी क्योंकि थियोसॉफी में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, बट आई वाज सर्चिंग कि कहाँ इसका सेंटर होगा। तो हम लोगों का पीएमसी पे एक प्रोग्राम चलता है स्वाध्याय करके, सेल्फ लर्निंग, उसमें ये बुक ली जा रही है और ये बुक बहुत डीप है जो मैंने पढ़ा। सेल्फ कल्चर बाय के जी की है। तो अभी मेरा इसी पे मैं पढ़ रही हूँ इसको और इस पे कुछ नोट्स भी तैयार करूंगी मैं। और ये बुक ऐसा है कि रियली मतलब हमारे इतनी साइंटिफिकली लिखी हुई है एक चीज। तो मैं सुन रही थी आप लोगों का, मैं पहली बार ही जुड़ी हुई हूँ। एक बार किताब दिखा दीजिए वापस। दिस इज ये बुक है। एक मिनट, ये मेरा बैकग्राउंड हटेगा। आई के टेमिनी जी की है, सेल्फ कल्चर, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यस So he has both he is a student of science as well as wisdom. So he has combined both in his book, and it's very enlightening. Yes sir, हसमुख भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, every meeting gives us some clues to different aspects of humanity as well as divinity. Thank you sir. एंड आबा जी, मैं कहूंगा कि आप जब ये किताब का थोड़ा सा अध्ययन कर लें तो अवश्य मुझे मैसेज करें और त्रिवेणी पर इसके बारे में बोलने आए। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू। अभी हम लोगों का सुबह गीता पे स्वाध्याय चल रहा है जी, कोई बात नहीं। जब तो उसका मुझे थोड़ा सा टाइम करेगा तो मैं इस पे जरूर बहुत समय है। हाँ, आप कोई भी मंगलवार मुझे बोल सकती हैं, अग्रिम रूप से चार मंगलवार पहले, इतना समय है। जी सर। यस हर्षवर्धन भाई। हाँ हसमुख, आप कुछ बोले थे फिर हर्षवर्धन जी। Yes, I would like to say something. Yes, sir. Before, if anybody wants to say something, let him speak first. Then I would like to join. Anyone speaking, so that's why. Okay. Yeah, Hardhan ji. Tendulkar ji, congratulations to you. Yes, sir. You have in the first part, you delineated the relation between man and the universe. Yeah. Really, the development of our higher self, the development of our whatever the potentialities that nature imparts with us, that you, through the wonderful light, you explained very nicely with all the references from the secret doctrine, and really it seems to be very enlightening. And in the second part, you have a kind of explanation about the relations with the man and his own mind. Yeah. So I was remembering and recollecting one best quotation from Dante's Inferno. Man, in its own way, turns the heaven into hell and hell into heaven. So this is the role of the mind. So our development of the inner strength depends on our mind. And really in the second part, you explained the potentialities in different ways. The capacities of the mind really work in the development as a whole. So I like that particular explanation. And the thing that we have to keep in the particular way, being the theosophist, being the aspirant, being the learner, or being the candidate. The word that you use, candidate, I like that. But here, being the esoteric knowledge and explanations with that, we am not going through that. But dropping of the ego brings about higher kinds of transformations. So here, Tendulkar ji, I think that this dropping of the ego, it happens just like the bird soars higher in the way. I remember one quotation of the poetic lines from Rohit Mehta, what he used to tell us about. When the bird goes higher, it drops the feathers. When it soars very high, it drops the feathers. Then there was one haiku that is called Japanese haiku of 16 lines.
પંખી ઉડતું જાય ઉપર ગગનમાં પોતાના પીંછા વિખેરતું જાય. These are the lines in Gujarati, that is the haiku which was quoted by Rohit Mehta often. So I must tell that whatever in the second part you concluded with the potentialities of our mind, really very nice today. I'm after quite a long time of 2 months interval, I have joined today. So it is really a nice privilege for me. Thank you very much. Thank you all the translators also, Madam Minakshi, Gidani ji, and the name I must, Lalitha, Natraj ji, Lalitha ji. Really, I congratulate you. I heard your name because you mentioned Keshwar in the way. It was the certain past years of more than 10, I think 10 to 15 years that you had been in touch with Keshwar, and really in our introduction, you mentioned her. Thank you very much. Yes, sir. Beautiful sum up. Beautiful sum up. Thank you. Beautiful sum up. नमस्कार सरल जी. सरल जी नमस्कार. नमस्कार. बोलिए. सबसे पहले तो मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ और सब ट्रांसलेटर को, और तेंदुलकर जी ने जो प्रस्तुत किया बहुत सुंदर व्याख्या उन्होंने की. तो मुझे उनकी बात से याद आया कि वेद में भी लिखा है यज्ञो व विष्णु, इस सृष्टि का उद्भव ही त्याग से हुआ है. और रूसो की वो पंक्तियां कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज. तो मनुष्य स्वतंत्र ही पैदा हुआ है, और स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन उसको कॉस्मिक लॉज का जब वो अनुपालन करेगा तो उसकी स्वतंत्रता स्थायी रहेगी. तीसरी बात उन्होंने कहा कि हमको गुरुदेव कठिन परिस्थितियों में डालते हैं जिससे हम उनसे तप के खरे उतरे. तो अग्नि परीक्षा उन्हीं की होती है. जब अग्नि परीक्षा होती है तो अग्नि परीक्षा के कारण ही हमें आंतरिक शुद्धता मिलती है, और जब हम आंतरिक रूप से शुद्ध होते हैं तो हमारी चेतना विकसित होती है, और उसके लिए हमको परसिवरेंस, बैलेंस, कमिटमेंट, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं. परसिवरेंस, बैलेंस और कमिटमेंट यदि हम रखेंगे तो हमारी वर्च्यूज डेवलप होंगी और हमारा जो है वो चेतना अनावृत होगी. ये एसेंस मैं समझ पाई तेंदुलकर जी की व्याख्यान से. बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे समय देने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए. मैं एक बात बोलूं, अग्नि परीक्षा तो द मोमेंट यू मेक एनी डिसीजन, नेचर का अग्नि परीक्षा उस तरह हो जाती है. Immediately, the moment you decide that you want to elevate yourself, the Agni Pariksha will be there immediately. And that Agni Pariksha is to test you how strong you are in your decision and how strong you want to go further. So Agni Pariksha to every moment. So that is the main part. So wait for the Agni Pariksha, and at the same time decide exactly what you want. We hardly know what we want. We simply just flow with the flow, like a main drop in the river, and is being dragged by the currents. So that current should be avoided, and say, okay, what do you want to do? Where do you want to land? Yeah. In the next shore, here, now, when? So all these questions, will lead you to Agni Pariksha, and Agni Pariksha, beware of it. It is coming. The moment I'm speaking here, the Agni Pariksha is going on within me too. जी. So that Agni Pariksha is, be alert to it. That's what I thought. Thank you, sir. Thank you. मेरे ख्याल से अतुल भाई कहीं चले गए, तो मैं ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अगर किसी और को कोई प्रश्न या बात ना हो तो केशवर जी हमें समापन की ओर ले जाएं प्रार्थना से. और तेंदुलकर जी का कनेक्शन चला गया है, पर वो मेरे मोबाइल से सुन रहे हैं. Shall I start? Yes, please go ahead. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न कर्णं न जिह्वा न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमि
न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संनो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चापस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञम अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम